नमस्ते, मैं हूं अनीता ब्रिट और मेरे साथ है आज थार का वार लेकर थार का कास्ट फातिमा सना शेख, अनिल कपूर, सतीश कौशिक एंड हर्षवर्धन कपूर। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हो? कैसा लग रहा है? जस्ट 2 more weeks और आपका हार्ड वर्क हमें दिखने में आएगा। कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत ही एक्साइटेड है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हमने बहुत मेहनत की है। बहुत ही एक अलग दुनिया है एंड ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने कहा है कि उनको बहुत इंट्रीगिंग और बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि बहुत ही एक अलग दुनिया दिखाई दे रही है। विजुअली बहुत ही डिफरेंट है और ट्रेलर में भी ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, रिवील नहीं किया है, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा इंट्रीग है। वो लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि है क्या फिल्म, सो कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। सो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वालिटी, यू नो, फॉर अ फिल्म वेयर people want to know more. So I'm just excited and I can't wait for the day when it's going to release. आप सबका क्या ख्याल, क्या क्या? सतीश जी, हाँ सेम है। यस, हम बड़ी खुशी है कि जिस तरह से ट्रेलर का रिएक्शन हमको मिल रहा है और तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। मतलब प्री प्रोडक्शन तो और ज़्यादा हो रही थी, लेकिन हमारा इन्वॉल्वमेंट जनवरी से जो शूटिंग शुरू हुई वहाँ पर और जनवरी से लेके अब तक का जो सफ़र है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। और ट्रेलर के रिएक्शन के बाद जो मतलब हमको बताया गया था, जो विज़न था डायरेक्टर का, राज सिंह का, जो पूरा जिस तरह से कैरेक्टर बताया गया था भूरे सिंह का, और जिस तरह से हमने एंजॉय किया पूरी शूटिंग को। और वेदर ज़बरदस्त था क्योंकि उन दिनों में राजस्थान का, नॉर्मली राजस्थान में जब जाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ गर्मी होगी, लेकिन हमने इस फिल्म को एक्चुअली तो सर्दियों में शूट किया है, जहाँ पे ब्रॉड डे लाइट ज़बरदस्त होती थी। और वो टिपिकल राजस्थान भी नहीं था कि हम कहीं डेजर्ट में थे। ये राजस्थान हमने कभी देखा ही नहीं है स्क्रीन के ऊपर, तो उसकी बड़ी खुशी है कि वो नोटिस हो रहा है, उसकी विजुअल अपील जो है नोटिस हो रही है और कैरेक्टर्स नोटिस हो रहे हैं। हर्षवर्धन जो हमेशा अपनी कुछ अलग चॉइसेस के लिए जिसके बारे में बात की जाती है, यू नो, मिर्ज़ा हो चाहे भावेश जोशी हो या एके वर्सेस एके हो, जहाँ पे मतलब उसने अपनी कला का प्रदर्शन कर दिया था सिर्फ एक सीन में आकर के पता चल जाता है। और वो प्रूव करता है कि एक्टर को कभी यार बहुत सारा को 2-3 घंटे नहीं चाहिए होते हैं अपने अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। कई बार एक चीज़ ही बहुत होती है। एके वर्सेस एके में कितनी तारीफ हुई और जब वो सीन आता है तो कितना आपको मज़ा आता है, एक परफॉर्मर का बिलीफ आपको पता चलता है। या थार में जैसे था, तो ये सब अब देखने में मतलब आप ट्रेलर के रिएक्शन के बाद हमको सबको पता चला है, तो बड़ी खुशी होती है इस बात की कि कुछ विज़न जो आपने दिमाग में रखा था, वो डायरेक्टर का था, वो प्रोड्यूसर का था, वो एक्टर का था, वो सब एक्टरों की आपस में या टेक्निकल यूनिट का एक जो यूनिसन था, मतलब वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। तो इसकी हम सबको बहुत बहुत खुशी है असल में, और बहुत एक्साइटेड है बिकॉज जब आपके काम के बारे में कोई ऐसा बोलता है कि कुछ अलग है, कुछ लीक से हटकर है, कुछ नई बात है, कुछ नया जॉनर है, कुछ यू नो, और एक एक्टर जो आपको बहुत इंट्रीग करता है, आपको कुछ ऐसा उसकी चॉइसेस को देख करके आपको वो सोशल मीडिया में पता चलता है ना कि हर्षवर्धन कपूर, यू नो, चॉइसेस ऑफ फिल्म्स हैव बीन डिफरेंट। अब ये हर एक्टर के बारे में तो नहीं बोलना चाहता था मैं, सक्सेस फेलियर की बात नहीं करता था। जैसे सक्सेस होती है ऐसे ही फेलियर होते हैं, बल्कि मेरे को लगता है कि शुरू में आपको फेलियर मिल जाए और कभी भी आपको फेलियर मिले, वो आपको एक्चुअली और सुदृढ़ और बहुत स्ट्रांग बनाता है। असल में हमने तो कम से कम लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी हैं। मेरी तो शुरू की 2 फिल्में थी एज ए डायरेक्टर, उससे बड़ी डिजास्टर्स तो कभी हो ही नहीं सकती असल में हिंदुस्तान में, समझे ना। लेकिन उसके बाद भी मैं आज 40 साल तक काम कर रहा हूँ ना, तो वो कोई यू नहीं थे। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ वर्क यू डू। आप जिस तरह का काम करते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज तो जिस तरह की मैंने 2 पिक्चरें बनाई थी, मेरे को तो कपूर जो है, मतलब मेरे को तो 60 किलोमीटर दिल्ली छोड़ के घर पे बिठा के आते कि यहाँ से कभी हिलना मत यहाँ से कल हिलना मत, और हमारे पास कभी आना नहीं, जुहू में, चेंबूर में कभी पास में आना मत। बट देन व्हाट इज इट इज द क्वालिटी ऑफ वर्क वन हैज डन, यू नो। वो बाद में कई बार क्या अच्छा काम जो होता है ना, वो बाद में पता चलता है, क्योंकि पहले पैरामीटर सक्सेस फेलियर के ही होते हैं कि क्या, मतलब हर बिजनेस का एक वो होता है, पहले शुरू में बिजनेस एंगल देखते हैं, क्वालिटी कई बार बाद में पता चलती है। ऐसे उल्टा भी होता है, कोई बहुत बकवास गंदा काम जो है वो सुपर हिट हो जाता है और आप लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है, और 6 महीने बाद पता चलता है बड़ा गंदा था यार, समझे ना, बड़ी बकवास पिक्चर थी। तो इट इज द सेम थिंग, it is the same thing. So it is better to face those moments right in the beginning of your career, but not
lose on the quality of work and lose confidence in yourself. मैक्सिम गोर्की जो है ना, रशियन प्ले राइट हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कलाकारों के बारे में बोली है कि कलाकार वो है जो अपने आप में और अपनी लियाकत में यकीन रखे. असली कलाकार वो होता है जो अपने, तो वो जब आपको अपने आप में यकीन होता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता असल में ना. वो मुझे भी किसी ने रोका नहीं असल में. नहीं तो मैंने बताया ना कि इस तरह की जिस लेवल के डिजास्टर्स थी उसका कोई वो था ही नहीं, कि कोई चांस ही नहीं था कोई आदमी वापस भी आ सकता है असल में ना, और दोबारा से डायरेक्ट कर सकता है या एक्ट कर सकता है. आज 150 फिल्मों से ऊपर में काम कर लिया, 15-16 फिल्में डायरेक्ट कर ली, थिएटर कर लिया, टेलीविज़न कर लिया, अब OTT पे भी ज़बरदस्त काम चल रहा है असल में चारों तरफ. तो क्या है ये इसलिए अपने आप का बिलीफ है. सो आई रिस्पेक्ट Harshvardhan Kapoor for the fact that he believes in himself, he believes in talent, and he believes in what he wants to do, and that is magnetic. वो जब चिपकता है ना तो वो लंबे टाइम के लिए चिपकता है. आपका अपना विश्वास. हर्ष, आपको क्या कहना है? Yeah, first of all, I don't think anybody's praised me this much in my life. So after these promotions, I'm going to start hanging out with Satish ji a lot more. Because I'm feeling good about myself. He's a very... Anil knows, I always used to tell him about Harsh. Today he's sitting in front of me and he's... अच्छा, हमको भी पता है कि हर्ष ऐसा है कि इसकी कोई ज़्यादा तारीफ इसके मुंह पे कर भी नहीं सकते आप. क्यों ऐसे? बुरा ना मान जा बेचारा कहीं. No, I think Satish ji is a very genuine person, So I think that it's all comes from a very felt and an honest place. But I honestly personally get very nervous, to be honest, because it's so hard to predict, right? I mean, we've all been working so hard for so long, but eventually the film does not belong to us post the 6th of May. It's for the people, and they are allowed to feel however they want to about the film, whether they like it or dislike it. But one thing that I would like to promise them is, if you have liked any of the work, that little bit of work that I've done in the past, this is again very different, so never to expect the same thing. And it's very encouraging, when you have people like Satish ji kind of believing in you and buying into kind of what you want to do, because see, they have no reason or ulterior motive to have to do that. Right. You know what I mean? So it's definitely something that he feels, and it takes time. And I think with Thar kind of now being the 5th film, maybe I think people will slowly kind of see what I've been trying to do. And no actor is going to be the best actor in the world at the beginning. I mean, it always takes time to kind of improve. And like he said, like Dad said, you might know a lot of things in theory, but the real growth only comes from experience. And what my biggest learning has been with Thar, because I also was involved a little bit as a producer, is this is the first time where I've had to be very objective. Like, I'm always objective about my own work, but I had to be objective about my own work and take a decision, right? I had to watch early cuts of the film and be like, is this scene working or is this scene not working? So there was no room to, how we convince ourselves sometimes that no, it's okay, the rest of the film. And so I really had the luxury and ability to isolate each scene, and if certain things were not working, we tried our best to kind of go back, maybe kind of, and improve them in whatever way. And if you can see your own self, have the courage, because that's the most painful thing, right? When you think that you've done something well, and then you see it and it's actually quite bad, and you're like, but you have to understand, why is it bad? Like what was the mistake? Why was the approach incorrect, and in what way was it incorrect, and then correct it, and then try and kind of better it. And that's a never-ending process that goes on. I mean, Dad's been an actor for over 3 decades. He still, I'm sure, is kind of working on scenes and rewatching old things. But I think the beautiful thing about Thar or Ray or AK versus AK Bhavich is it's a picture of who I am at that time. Of the person that I am, the human being, the creative person that I'm at that time. And you can get better, but if you're honest, that honesty, it kind of is there somewhere. Even if the craft is not very refined, that truth,
you can see that truth, and as you get older, you learn more about the craft, and so you try and compensate maybe with your craft. But I would like that truth to kind of never go away, and kind of keep trying to unlearn to find that honesty in the performances again and again. So I think that, yeah. Anil sir, would you like to add something? No, I think a lot has been said. So I'm also sometimes what happens is during promotions you come to know your co-actors, because that's the time, because everybody's so involved in making the film. Yeah. So nobody really speaks what they feel and what they've learned and what they want to unlearn and what the experience was, and from there you come to know the people. In spite of he being my son, still I to a certain extent I'm understanding him more. So for me also as a parent, it's a learning curve. Okay, what can I do? Have I done right decisions I've taken with my children? So for me also it's a learning process as a producer, as an actor. So we all, at any stage of our lives, it's just a work in progress, and what is important that we should keep on getting opportunities, कि हमें इस काम मिलता रहे और हम काम करते रहे और अच्छे लोगों के साथ जुड़ते रहे और सीखते रहे उनसे. तो यही है, मुझे लगता है ये फिल्म एक अच्छा, जब से हमने एक तस्वीर डाली थी, फॉरगेट द ट्रेलर, कि कब पता चलता है कि जब हमने पहला ये किया था कि हमने 3-4 तस्वीरें डाली और वहाँ से एक पॉजिटिव फीडबैक मिला. नहीं तो कभी कभी होता है तस्वीरें आप डालते हैं, आप ये करते हैं, कोई रिएक्ट नहीं करता. तो तस्वीरों में भी एक ऑनेस्टी थी, उसकी जो स्टिल्स थे, वहाँ से शुरुआत हुई. तो नहीं यार, कुछ बात है इसमें. फिर उसके बाद थोड़ा सा हुआ कि यार अभी तस्वीरें तो लोगों को पसंद आई हैं, अब असली ट्रेलर, क्योंकि ट्रेलर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रमोशन. एंड क्योंकि इतना कंटेंट है, इतना मटेरियल है, आज पूरी दुनिया से मटेरियल लोग देख रहे हैं. So you can make and break a film, the first information which goes out. Yeah. So you have to be very, very careful. It's very tough कि यार आपका ट्रेलर लोगों को पसंद नहीं है, जो आपने देखा वो पसंद नहीं है, and then very tough to redo the damage done आज के ज़माने, because people have moved on. Yeah. So far so good, and now the real test is, we've done our best reaction है, but you never know. We hope कि 6 मई को लोगों को फिल्म भी उतनी पसंद आई जितनी तस्वीरें पसंद आई हैं, जितना ये ट्रेलर पसंद आया. See, also, I'd like to say something. I think, see, there are always going to be people that don't like something. Yeah. And there are always going to be people that like the same thing, But the idea is that there is definitely a lot of originality and there's merit in the work, People may still not like it, but there are certain things that are just there, and a film is really the sum of its parts. So, some things might be better than other things. There are maybe some scenes that might be better than other scenes, and when you really get into it. But there are so many new talents in this film. There's Shreya. I think no matter what happens with the fate of the film, her work is, you can't argue with. It's outstanding. So there's Ajay, whose music is incredible. You can't argue with that. Vasik has been an incredible production designer for so many years. He has a young team, a couple of people that worked for him on set. They're unbelievable. You can see that in the trailer. There's Mukti there. She's new. She's a brilliant actress. So sometimes, what happens? I hope that it all has come together and people really like the film as a whole. But even for the people that feel that maybe, it could have been better, there's a lot of real talent and beauty and brilliance in there. So I think if we as a production company have managed to even benefit some of the careers, that's enough. That's most important is, what I've liked about the captain of the ship, Raj Singh, like there are a lot of Raj, so it's better I say Raj Singh Chaudhary. Because we keep on saying Raj. So what I liked is his temperament and how he's kept, his calm. Because, there were very, very strong individuals in this film. And in those strong individuals, to keep his calm and exactly get what he wanted without losing his cool. Otherwise, what happens is, when there are such strong individuals and there are people who have got great body of work, there are certain newcomers who come with their certain
thought process, and they asked so many questions. कभी कभी मैं थक जाता है यार, ज़्यादा ही सवाल कर रहा है ये, अरे जाके काम कर रहा है यार. You understand I'm telling you. So, you have to, sometimes we, as me, Satish, after working for so many years, sometimes we slightly get a little impatient because we're working since so many years. So, I'm happy that, he had that, which the biggest thing besides his talent is his temperament. And it's going to take him a long way. And I think it'll really, he's going to benefit a lot from this film. And hopefully he remains like this. नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि एक फिल्म के बाद थोड़ा आदमी so I am there to with a Stick. hopefully, and because he has the ability, and I hope he gets all the success which he really deserves from this film. आप दोनों से मुझे ये पूछना है, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगी. What is that one thing जो आपने इन दोनों young talents से सीखा है? What is that one thing, quality that you would like to imbibe? मुझसे पूछ रहे हैं आप? आप दोनों से, फिर मैं क्विकली इसका जवाब दूंगा कि मैंने सबसे पहले तो हर्ष से तो मैंने ये सीखा है कि his passion, his the way he convinces, इसमें conviction है, और his knowledge about what is a good material, what is a good talent. He has an eye for that. And from the time he read the script of Slumdog Millionaire, not that he always goes right, but most of the time he's gone right, because everybody can go wrong. But most of the times he has directors whom I, like he's talking about Rajan DK since I don't know which is the first film of Shore in the City. Shore in the City. But Dad, ये राजन DK के साथ पहले कौन है यार? मैं उसको DKNY ही बोलता था. मैं आज तक उनको DKNY मतलब क्या DKNY बोला नहीं, राजन DK sir. So suddenly now Raj and DK are the most sought out directors, but he's been talking about him since and so many years from the time they came. Then so many of the filmmakers he's spoken about, and अभी भी 2-3 अतरंगी directors के नाम लिए हैं जिनका मैंने नाम ही नहीं सुना है. And बोले इनके साथ काम करना, मतलब कौन है यार? Yeah. Still not taking the meeting. I've been trying to convince him to meet this one director for 1.5 months. Not met him. So what I'm saying is, so he has that. So to name a few of the directors, so that I have I have to take. That's what I've learned from him, that how to spot and how to work and collaborate with talent which is not known but still has it, and to see the quality in it. And with, of course, with where she's concerned is, of course, she's too real, and she's so real and so vulnerable. And मैं तो अभी इसको यही कह रहा था कि जिस फिल्म में मैं काम करता हूँ सबसे पहले मैं नाम फातिमा का लेता हूँ. मतलब फातिमा का लो, मेरे ऑपोजिट नहीं, because but obviously I'm working with a lot of young leading men, and तो मैंने यार फातिमा को लो यार, so she's the first choice, because I think she's very special, she's very original, and there is some quality which makes her original and unique, and which you saw in Dangal. And very well the filmmakers captured her. And uske baad, of course, I saw the other films of Lido I saw, and even Thugs of Hindustan didn't do well, but there was nothing I felt that she had done wrong. There was that magnetic quality, that fierceness to stand and work against two stalwarts, and then of course in Thar, which I saw, face to face and in real. So I think this is just the beginning of a glorious career for her in front of, and yeah, but तो बस इनको भी थोड़ा सा संभालना पड़ता है. कभी-कभी ये भी थोड़ा सा बहक जाती है और बोलता है कि मैं करूं कि नहीं करूं. मेरा काम करते रहो, बेटा. I should just keep on working, because sometimes what happens is, sometimes you become so choosy, and we should be ready to sometimes fail. क्या हुआ यार, ज़्यादा क्या होगा यार, फिल्म नहीं चलेगी ना, डरो मत यार, नहीं चलेगी. आप you are talented, नहीं चली, लोगों को मालूम है यार क्यों नहीं चली है, तुम मत डरो, करो,
You know, sometimes, not always, but sometimes you should take that chance, take that leap of faith, you know, and go ahead and do it instead of just sitting at home for one year and waiting for the right director and the right film to come, you know. So I'm happy that today they worked with new director. Otherwise, you know, playing safe, नहीं राज ने तो कभी अब तक काम ही नहीं किया है. ये नया डायरेक्टर है, मेरे राकेश बेरा ही आना चाहिए, जी आना चाहिए. You never know, you know. I was telling yesterday, Shahid also. You know, you never know. You know, there is, you know, there are one film directors जिनकी पहली film नहीं चली हो, but दूसरी film can become a blockbuster. You know, why should you? You should always be open. I would love to work with all the biggest filmmakers. That is also my dream, and I always want to pursue that all the big filmmakers should make it because you feel very secure and safe, and आपका थोड़ा, you know, काम कम हो जाता है, which is always there. But they also want to work with the biggest stars, na? And they also want to do the right casting. Every time they can't cast you. Correct. So you also have to be, you know, finding the right script and going ahead and working. This is my, you know, humble take. Because ये मौका मिला तो मैं बोल ही दो. But that's a great thing, sir, what you told. I agree with him completely. I Whatever mean, he it's a big thing, you know, hearing somebody like him saying such things because बहुत important होता है. कभी-कभी you lose morale, you lose confidence in yourself, and sometimes to have person, you know, like him say कि नहीं बेटा तू ठीक है, you're doing well, and you know you should have confidence in yourself, and you should be ready to fail. And that's a big thing. Now, you know, I have changed my approach. I reach out to people. I want to develop things. I am actively developing projects for myself because if I'm not getting the work that... Not developing for me. तो खुद के लिए कर रहे हैं सब. अरे ऐसे मैं तेरा नाम सब जगह बोलो तो मेरा you're not suggesting my name. यार आप बहुत बड़े हो. मैं बड़ा नहीं हूँ बिल्कुल. बस भाई खत्म. आप मेरी फिल्म में हो. और मैंने जो मतलब मैं तो हर्ष के बारे में बोल चुका हूँ कि what I like about him and the kind of attitude he takes towards his work that I've explained, and the passionate energy, the 1 point formula of pursuing something which you believe in, Right. and the inner talent, the inner turmoil, and selecting right script which he likes, that's totally because जो कोई भी आदमी बनता है ना वो अपने विश्वास पे ही बनता है. अगर हम आज यहाँ बैठे हुए हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं तो हमारा कुछ विश्वास था कि हम दिल्ली के किसी छोटे से घर में बैठे हुए इमेजिन करते थे कि हमें फिल्मों में जाना है और हमें फिल्मों में जाके कॉन्कर करना है वहाँ पर, और ये स्क्रीन पे जो काम करते हैं ये क्या कर रहे हैं, इससे बेटर तो मैं करूँगा. असल में जब हम पिक्चर देखते थे हमें थोड़ा ना पता था ऋषि कपूर हमारा दोस्त बन जाएगा, अमिताभ बच्चन से हमारी दोस्ती हो जाएगी या हम उनके साथ काम करेंगे. तो वो अपना विश्वास होता है टू डू समथिंग विच यू बिलीव इन. नहीं तो किसी और प्रोफेशन में चले जाते. तो वो तो हर्ष में साफ दिखाई देता है और इसके आगे आने वाले कामों में दिखाई देगा. जहाँ तक फातिमा का सवाल है, वो तो कई बार क्या होता है किसी आदमी को पहली बार जब आप मिलते हैं ना, मैं एक्चुअली इससे पहले फातिमा को कोई मिला नहीं हूँ. मैंने ऑफ कोर्स इसका काम देखा है जब से ये चाइल्ड एक्टर थी और चाची 420 में थी और फिर दंगल की और उसके बाद कितनी फिल्मों में किया. पहली बार आपका मिलना जो होता है ना वो बड़ा डिफाइन करता है आपके लिए. मेरे को अच्छी तरह याद है, हम जब वहाँ पर मैं राजस्थान पहुँचा था, कौन सी जगह थी, घन मेरा क्या घाने राव, वेरी ब्यूटीफुल बुटीक होटल, प्रोडक्शन हैज़ टेकन ओवर, बहुत कमाल की जगह थी असल में. और वहाँ पे फातिमा जब आके मिली तो इसका जो मेरा मिलना, बात करना और गले लगना और सर कह के बात करना, तो ऐसा लगता है कि कोई पता नहीं आप बरसों से शायद से कुछ जानते हो कि आप तो पहली बार मिल रहे हो इसको यार. तो वो आपका जो है ना आपकी पर्सनैलिटी दर्शाता है असल में कि यू आर सो वार्म, यू आर सो आप कनेक्ट इमीडिएटली कर सकते हो. और आपने मतलब इस आदमी को जिसको आप देख रहे हो, मिल रहे हो, गले लगा रहे हो, समझे ना, एक डॉटर लाइक हग जब आपको मिल रहा है और आपको वो वार्मथ आपको पता चल रही है, वो इसलिए कि आपके कुछ काम की रिस्पेक्ट भी है उस जूनियर आदमी को. और हमको जब हम मिल रहे हैं तो हमको भी लग रहा है कि यार मैंने इसको इस फिल्म में देखा है, बट बहुत कमाल का कि पहली मीटिंग के अंदर शी इज़ सो वार्म, तो वहाँ से आपका दूसरे आदमी का कैरेक्टर पता चलता है. फिर काम करते हुए देखा
तो हमको तो पता ना ये तो यहाँ की लड़की है, ये कैसे, मतलब जब उसको कॉस्ट्यूम में देखा, मुझे अनिल ने फोटो देखा है, अच्छा सी लुकिंग द कैरेक्टर सो मच यार, कहाँ दंगल की वो लड़की थी और कहाँ पे ये लड़की है, यू नो. So that is the power of actors to change themselves according to this thing, and that can only happen with actors who are passionate about their work, about their profession, about what they want to do. So, and दूसरी बात यह है कि अब हम हमेशा जब आप यंगर होते हो ना, तो आप सोचते हो यार मेरे को मनमोहन देसाई के साथ काम करना, हमारे तो ये होते थे ना, मनमोहन देसाई के साथ काम करना है, प्रकाश मेहरा के साथ काम करना है, समझे ना, सुभाष घई के साथ काम करना है, ये ऐसे होते थे. पर आप जब एक एज से गुजर जाते हो तो आप है ना, यू वांट टू क्लिंग ऑन टू द यंगर जनरेशन, यू नो. आप चाहते हो कि यार मैं इस यंग के साथ काम करूँ, इस लड़के के साथ काम करूँ, या इस यंग डायरेक्टर के साथ काम करूँ, या इस यंग एक्टर को डायरेक्ट करूँ, यू नो, या इसके साथ पिक्चर बनाऊँ. तो ये एक्चुअली पलट जाता है. पर ये भी उन्हीं लोगों के साथ होता है, ये भी उन्हीं लोगों के साथ होता है जो पैशनेट होते हैं और जो अपने आप को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं असल में, अकॉर्डिंग टू द टाइम्स, यू नो. नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि बहुत हम कई लोग ऐसे भी हुए जो 40 साल काम करके वो अपने स्पेस में जी रहे हैं आज, वो उनको लगता है ये लोग क्या कर रहे हैं यार, हम जो काम करते थे वो बहुत कमाल है, और वो अपने उससे स्पेस से हिलना नहीं चाहते, और वो इसलिए वो ग्रो नहीं करते हैं असल में. तो एक तो यंगर जनरेशन के लिए रिस्पेक्ट, यंगर माइंड्स के लिए रिस्पेक्ट, बिकॉज दे आर ब्रिलियंट, इन दोनों से कनेक्ट होता है. और दूसरा देयर इंडिविजुअल पावर एज एन एक्टर, एज एक्टर्स हु बिलीव इन देमसेल्व्स. दोनों की जर्नी जो है वो अनबिलीवेबल रहेगी आगे आने में. फिर एक टाइम ऐसे भी होगा ये भी ऐसे बैठे होंगे और कोई यंगर जनरेशन का बैठा होगा और ये अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे होंगे, यू नो. दिस कीप्स ऑन हैपनिंग लाइक दैट, यू नो. Yes, there is a cycle. Great. Fatima and Harsh, would you like to add something to them? You know, what have you all learned? आपने क्या सीखा इनसे? It's such a beautiful thing to hear these lovely things from these people, because ये लोग तो मतलब the body of work, the stardom, and you know. हम फिल्म भी प्रमोट करें ना. अरे यार थोड़ा फिल्म प्रमोट करने के बाद तारीफ करनी पड़ती है. थैंक्स. थैंक्स, बहुत अच्छा लगा मुझे. थोड़ा बहुत मिर्ची मसाला भी होना चाहिए ना प्रमोशन में. बिल्कुल होना चाहिए. वो तो कहता है by the time you learn that craft and art to speak also, you know. Otherwise हम थोड़ा ना कि 80s के अंदर बॉम्बे में उतरते के साथ अपनी हमारी वोकैबुलरी और हमारी बात करने का तरीका कि ये ऐसे होता है, जिंदगी ऐसे होती है, ऐसे करता है. आई रिमेंबर शबाना ने मुझे पहली बार एक लायंस क्लब के फंक्शन पे मैं थोड़ा सा काम करना शुरू करता. मैं कहने लगी एक झूम में लायंस क्लब का फंक्शन है सतीश, तुमको चीफ गेस्ट चल. मैंने कहा नहीं शबाना, आई कांट गो, मेरे को नहीं भेजना, मेरा नाम सजेस्ट मैंने कहा मैं बोल नहीं सकता, इम्पॉसिबल. यदि पागल हो गया बोलो अभी जाकर और जो शबाना ने मुझे भेजा उसके लिए लायंस क्लब के लिए, तो वो मुझे सीखने का मौका मिला. तो यू ऑलवेज लर्न, यू नो. सतीश ही डजंट नीड माइक, शी इज अ थिएटर एक्टर. माइक अगर वहां भी रहेगा तो आवाज पहुंचेगी. हाँ वैसे so it is always like yeah. You know, so this is the relationship we have. It's so easy, एक दूसरे का टांग खींचना, it's so warm, कहानियां शेयर करना, it's so personal. ऐसा कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है. तो मेरे लिए यही बहुत सही है. And I want to work with them again, and I want to grow with people like them. So I'm very happy. Harsh? Sorry, can you repeat the question? I think some qualities आपने जो इनसे imbibe की है. No, first of all, I don't think I've ever been praised so much, so I need to go back to acting class after this. Immediately line up some sessions with my acting coaches. I need to go rewatch all my films to double check if you're right. Talking about the same person, you know. But it's very surreal, because see, the thing is that they've seen it all. You know what I mean? They've seen it all. I mean, it's difficult. It's very difficult for anybody to put themselves in somebody else's shoes, you know. So it's Fatima and I can't imagine. It's very hard for us to imagine their lives. Yeah. And all the things that they've imbibed, right? So And different world and different way of working. Exactly. Much more harder, I believe. Yeah, I mean, I can definitely believe that, and टाइम हो गया लगता है. but I वो लोग आ गए अंदर. so I think what I've taken is, see, we're very new, so we haven't had the sorry, you want to say something? No, sorry, very new, so we haven't had the
we haven't had to reinvent ourselves. We haven't had to kind of do that because we're still kind of coming in. We're kind of new, you know. So this is like the honeymoon period, and I'm sure that things will get harder. And when things get harder, you have to dig deeper inside you, you know. And then that moment will come, and they have navigated that with grace and class and dignity, because you know this is, in this kind of business you can, you know, maybe sometimes feel a bit desperate and do things that you would not normally do, and you know, and so it's, you know, class is permanent in a way. You want to kind of try and hold on to that dignity even when being in kind of difficult situations, while kind of trying to be fight for something, fight for what you believe in. So I think that's kind of something that, and obviously work ethic, discipline, hard work, and that's not even a conversation. That's something you have to do if you're in any kind of job, you know. So yeah. अच्छा, नाउ आई विल हैव टू रैप अप, बट मुझे ये सवाल पूछना ही पड़ेगा. घर में नई खुशी आ रही है आप दोनों के. हाउ इज द एटमॉस्फेयर, घर का माहौल कैसा है अभी फिलहाल, और कितने खुश तो बहुत होंगे. इस वक्त तो हम लोग सिर्फ यही है कि वी जस्ट प्रेइंग टू गॉड दैट यू नो वी वेरी हैप्पी, बट ऑब्वियसली वेटिंग फॉर द डी डे एंड द चाइल्ड इज हेल्दी एंड दैट्स इट. एंड यू नो लफ्जों में बयान करना बड़ा मुश्किल है हाउ वी आर फीलिंग, बट डेफिनेटली वी आर वेरी हैप्पी. Harsh, would you like to add something? No, I think what Dad said, and I mean, I think it's nice that everybody is kind of, you know, it's a thing, because Sonam has been such a big personality, you know, so obviously everybody kind of wants to share that happiness, but also I think it's a very intimate and personal experience for the two people that are actually the parents. Yeah. You know, so I think it would also be important to respect their privacy in a way, because I think when you love someone and then you're producing someone that you love, you kind of, it's sacred, you know what I mean. It's not to prove anything to anybody, or it's not for the world, it's for you. So would be nice to kind of give them that space as well. So yeah. Well, on that note, thank you so much. It was really, Thank you so much. बहुत ही मजा आया मुझे 2 बार. But thank you for doing this, and all the very best for that. Thank you Thank you. so much. Thank you.